नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल में हम हाजिर हैं इस बार बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक लेकर, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, वायु प्रदूषण और सेहत पर इसका कुप्रभाव। We now have a yoga session and we have with us Dr. Sudeep Kumar Jha, a scientific, therapeutic yoga and naturopathy health expert. आज जो परिस्थिति है उसमें जो खासकर मेट्रो सिटी में दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन से हमें बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम कहीं से आते हैं, जैसे हम बाहर गए और वहाँ से आए तो हमें सबसे पहले पॉल्यूशन के कारण आँख में जलन होती है। तो आँख में जब जलन होती है तो आपका एक सामान्य सी चीज़ें हैं जो आँख को जो बिल्कुल फिल्टर पानी है उसे थोड़ा सा वॉश कर लें। उसके बाद जो है सो आँख को वॉश करने के बाद दोनों हाथों को रबें, घट से दबाएं और उसको धीरे धीरे जब काफ़ी गर्म हो जाए तो थोड़ी देर आँख पे रखना चाहिए, जिससे कि हमारा आँख चार्ज हो जाए। और एक विधा है जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया को आप रात में रख दें डीप करके और सुबह में उसके पानी से अगर वॉश कर लें तो आपकी आई साइट भी बढ़ेगी और आंखों पे जो इफेक्ट है पॉल्यूशन का उससे आपको निजात मिलेगा। So the second session is a very important session and very relevant too. It's on climate change, air pollution and effects of pollution on health. India is among the 33 extremely high-risk countries where children are most at risk of climate change affecting their health. We are going to face way more challenging climate extremes in the near future. The IPCC report tells us that some of these changes are irreversible and will last for centuries, if not a few thousand years in the future. The damage seems to have been done. What can we now do to save the future of our children? I think there's a lot of literature out there which states the problem. What I'm going to focus a bit on, taking cue from your question, is where are we going wrong really? There are so many people making efforts, whether it's the ministries, the Supreme Court, the regulators. I just wanted to, set the tone here that we whatever we posture internationally, and I'm using my words very carefully, we need to really start looking within because climate impacts are known, the science is known. The problem is institutionally how we are responding to the public health challenges of air pollution. What we've done is we have given the Ministry of Environment and Forest the whole nodal responsibility. Now, is it really equipped to handle the magnitude of the problem? I think that's the first message I wanted to give. Because what it does, we have the National Clean Air Program, etc. We need to do collaborative programs, participatory approach, all of that. But when you pit it against ministries like the Road Transport, Ministry of Coal, Ministry of Industries, Ministry of Petroleum, Ministry of MSME, Agriculture, Urban Development, these are high engine, high energy guzzling ministries. How do you, when you pit a Ministry of Environment, which is a pretty soft ministry with a very little budget, compared to these very, very powerful ministries, which are the engines of growth of this nation, there's always an offset, there's always a sort of an exchange that is happening where all these engines of growth are sort of taking over the current environmental frame. And the Ministry of Environment and Forest, with all due respect, doesn't really match up to the challenges that are thrown by the other development engines. And I think that is really one of the key things that I feel we need to tackle. आप सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का इम्पैक्ट देखते होंगे मरीजों में। किस तरह का इम्पैक्ट पाते हैं, किस तरह का देखते हैं उनमें बदलाव? When we address this issue, we first need to address what exactly is the pollution, from where it comes. Now, if we really see that this entire belt is surrounded by the entire industrial belt around, whether it is Saibabad industrial belt, whether you have seen this Gazipur landfill area,
We have seen this Vivek Bihar belt of this thing. Anand Bihar railway terminal as such, if you really see, that is one area where, and we are connected with Uttar Pradesh where diesel vehicles are in abundance, and the diesel vehicles are, so all these and nearby villages, this parali burning and other things are causing air pollution. Believe me, lot of our hospitals are getting, and recently a lot of cases of respiratory diseases are coming, and they are not of mild to moderate symptoms. They are of serious symptoms. Now we have in Pushpanjali Crossley, which is made specially now, we have a respiratory intensive care. Now that respiratory intensive care, which is almost 30 beds, most of these 30 beds practically are serious cases of respiratory ailments, and practically if we really see, most of them, I can say 80 to 90% are respiratory ailments because of air pollution and other things. And I'm sure, and as Sanjay Bhai has said, it needs sincerity. And अगर हमें इस चीज में सिंसियर रहेंगे और इस चीज को प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, आई एम श्योर. आपने एक शंकर भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था एज का, क्या एज कम हो रही है? मुझे लगता है कि अगर इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, और जिस तरीके से हमारा एवरेज एज इस कंट्री में बढ़ रहा है, बीच में कुछ इफेक्ट हुआ, अगर बढ़ रहा है तो उसको हम अचीव कर पाएंगे. तो सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से और मीडिया की तरफ से, इन सबको जागरूक होके इस एयर पॉल्यूशन को प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा, और इस महामारी को हमें जूझना पड़ेगा. और खासकर मैं कहूंगा हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं और चिल्ड्रन जो हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, उन लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी हम एयर पॉल्यूशन से एक्सपोज ना. What are the 3 urgent health issues that you need addressing in the national capital, and how do you see the next year unfolding itself? You can see that the effect of the pollution on human life is very severe. It is going to be severe now. It has been raising since centuries, because after the industrialization in 1790s, then effects of pollution on climate changes, the solar effects, and because of that, there's the effect on the human life, not only human life but plant life, animal life, and in fact the soil of our earth. This is also affecting them. This is basically a chain network. If our soil health is not good, then the nutrients are not good. We're taking these nutrients, so ultimately it's affecting directly or indirectly on human health. And what you said, the 3 issues, basically 3 issues are mainly the respiratory issues, which we have to tackle down. Then because of pollution, there are the neurological disorders which is coming up, and the psychological issues also, because we here and there we see that there's the pollution. Because of that pollution, the effects on the health, and the people in the COVID time also, there are lots of psychological problems. And most effect is of pollution is the vulnerable population. दिल्ली में पोल्यूशन से मरीजों में क्या फर्क देखते हैं, और दूसरा ये कि जाड़े में ये क्यों बढ़ जाता है, पेशेंट की संख्या क्यों बढ़ जाती है, पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है? और जाड़ों में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जाड़ों के अंदर सारे फैक्टर्स जो हैं वो AQI को बढ़ाने वाले बन जाते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए कि टेम्परेचर एज सच, इस टेम्परेचर के अंदर हवा जो है नीचे सेटल ज्यादा होती है, और उसके बाद यूजुअली जो हवाएं जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको बहा के ले जाती हैं, उनका वेग कम हो जाता है. तीसरा इसमें जो जितना भी है, आप AQI की बात कर रहे हैं, AQI के पैरामीटर्स के साथ साथ उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो जो जब तक अटके रहते हैं हवा के अंदर, इधर उधर नहीं होते, तो उसकी वजह से जो हम हवा इनहेल करते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर, वो बहुत खराब हवा मानी जाती है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक निकल के आ रही है कि हम सरकारें जो नी जर्क रिएक्शन इस मौसम में करती हैं कि आज स्कूल बंद कर दो, आज कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, आज मोटर बंद कर दो, और ही बंद कर दो, उन सबका कोई फायदा नहीं है. सरकारों को, कम्युनिटी को और हर मानव को जब तक हम ठान नहीं लेंगे कि हमने इसको ठीक करना है, तब तक मुझे लगता है दिल्ली बहुत दुख है. इस मौसम में खास करके पोल्यूशन के प्रभाव से अस्पतालों में, नर्सिंग होम में भीड़ बढ़ जाती है पेशेंट. क्या डायग्नोसिस से ये पता चलता है कि ये मरीज केवल और केवल पोल्यूशन का शिकार है और उसकी वजह से बीमार हुआ है? एयर पोल्यूशन से हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं.
अब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, राइनाइटिस हो सकता है। और जब ये हम देखते हैं कि बहुत तादाद में आ रहे हैं और इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, वो हमें पहले तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बताती हैं कि हमने वायरल मार्कर्स किए, उनसे हमें बला के कुछ नेगेटिविटी आई, लेकिन ये जो सीजन टू सीजन हो रहा है, इसी समय पर्टिकुलर स्टेट से हमारे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में, और पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा आ रहे हैं, तो लगता है कि ये एयर पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज बाय एक्सक्लूजन ओनली। और ये फिर हम देखते हैं कि जो सभी बात कर रहे थे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है कि उस जगह पर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यदि हम इन सारी चीजों को कोरिलेट करते हैं तो यही पता लगता है कि ये जो जितने भी सिम्टम्स लोग आ रहे हैं, जिनके इसके कि वहां पे इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ उनके बाकी सब जो पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, उनका यदि हम कुछ कंसंट्रेशन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो रही है, तो दैट शोज कि ये इनडायरेक्टली दिस इज ऑल रिलेटेड टू एयर क्वालिटी। तो यदि मेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, मेरे लंग्स में इरिटेशन होगा, मेरे लंग्स में मेरे को एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होंगे, ये सब मार्कर्स भी मेरे को प्रोन करते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शियस डिजीज, टुवर्ड्स इवन कोरोना। जो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट ज्यादा कुछ लोगों को ज्यादा क्यों रहा, क्योंकि वहां पर इस समय हमारा एयर क्वालिटी खराब था और उसकी वजह से कोरोना ने ज्यादा सीवियर अटैक किया काफी कुछ लोगों को। We now enter session 3 on status and challenges for TB control in India. There are two TB drugs recently introduced in India, Prevalent and bedaquiline. What's your experience in treatment outcome? These two drugs which have come up now has definitely revolutionized the tuberculosis treatment for us, especially for our MDR patients who used to be on IV treatment, and a treatment regimen was used to be for 2 to 2.5 years. Now the newer regimen which has been introduced by introduction of these bedaquiline and Prevalent, we can reduce this to as low as 11 months. Also, patients now don't have to take IV injections, IM injections, which they used to take previously. So the patient's response in terms of accepting the medicine, acceptance to the medicine has improved. So that has helped us in treating these patients faster, as well as the success rate has definitely increased. The union government had said that dedicated infectious disease hospitals are being established as part of pandemic preparedness and response, and this will contribute significantly to TB care and management. Where are we now? I would like to say that the government sector, the patients are not very well attended to in case of tuberculosis, because the people, most of the centers, barring the medical colleges, the people are not that very trained, or they are not experts in the field of tuberculosis. They just follow the guideline which is just prescribed, and one pill doesn't suit all. Many of them have complications, they don't tolerate the medicines, the weight bands, everything. It just boils down, because TB treatment needs to be tailored down to every patient's need. So that is the biggest problem in the fixed dose regimens and the weight bands, that one regimen is there for all. Whether you tolerate it or not, you are fed on this medicine only. In TB programs, always compliance is a big issue. So what's your take on this? We all know that there was a dot strategy. Now there is a 99 dot strategy. There has to be some monitoring mechanism, whether the patient is in private sector or in government sector. If the patient is in private sector, then we have to have some asking question type of things, or telephonic monitoring, or your nursing staff can monitor. One of the things which has increased the compliance, I would say, is a FDC. That is, we have reduced the number of pills, and the number of total pills required for the TB treatment is now lesser. And also we are going towards the injection-free regimen. Injection-free regimen means now we are completely, for MDR and XDR TB, we are going towards bedaquiline-based regimen, which is a newer drug. So what has happened, that because of the bedaquiline, the total duration of therapy is also decreasing, and injections are also, there is no injection in the treatment. So our compliance is improving. Being a part of the TB treating team, what is your advice to stay safe for patients
who are in high TB prevalent areas? My frank advice would be maintain your immune system, have good high protein diet, avoid gatherings, avoid to go to lot many gatherings. Most and major important point over here, I would like to make it over here, is cough etiquettes. Kindly cover your face, nose while coughing. That is very important. A small measure, a small step, very absolutely, just by covering your nose and mouth thoroughly is going to spread a lot of infections and cut the chain. And one single cough releases 3,500 bacilli, bacteria of TB, which remain in air for good 45 to 48 minutes. And if your immune system is on the lower side, and if you happen to pass in that particular area, and if you inhale that particular air which is already having that bacterial load, and if your immune system is on the lower side, even you're going to have it. So my advice would be just small 3 steps. 1, cover your face while coughing and sneezing. Do not spit right, left and center. Have good high protein diet. Avoid gatherings.